In an ideal world, we all want a world class designer to make our home, to make our space look very luxurious, rich, comfortable, yet sophisticated. But our pockets run dry. But thankfully, I am here to help you. Hello everyone, I am architect Tanya Singhi back with another video another day. So the other day I put up an Instagram post asking कि अगर आपको कोई भी interior या home decor related queries हो, so you can ask me and I am here to solve all your problems. और बहुत सारे जो queries थे, बहुत सारे जो problems थे, बहुत सारे questions थे, वो थे affordable decor. So here I am to give you affordable decor ideas for your living room. Today, I'm going to share with you 6 alternate ways with which you can save a lot from your pocket. Also, you can make your home look the way you want to. Bringing ideas for you, I thought, why not I give you product suggestions too? जब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप अपना घर इस तरह रीडेकोरेट कर सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको प्रोडक्ट्स भी बता दूं जिनके साथ आप रीडेकोरेट कर सकते हैं. अब आप मुझसे ये बोलेंगे कि आप मुझे प्रोडक्ट तो बता दोगे, प्रोडक्ट लेके कैसे आएंगे हम? उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास. मैंने ये सोचा कि आपको प्रोडक्ट सजेशंस तो दूं, पर वहां से दूं जहां से आप इजी ले सको. Yes, I am going to give you product suggestions from Amazon. Yes, अब आप पूछेंगे Amazon क्यों? नंबर 1, Amazon सबके फिंगर टिप्स पे. हम कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऑर्डर करते ही रहते हैं Amazon से. फिंगर टिप्स पे है, इजी है उस पर ऑर्डर करना, अफोर्डेबल है, आपके पॉकेट फ्रेंडली है, ट्रस्टेड वेबसाइट है, एंड ऑफ कोर्स वहां पर अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं एंड यू कैन नेम इट and you get it there. So yes, I am going to give you product suggestions from amazon.in. So without wasting more time, let's get into the video. Before moving forward, if you like my content and already have subscribed to my channel, thank you so much. And if you haven't, please subscribe to my channel and also press the bell icon ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगली बार. और अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा है और अच्छा लग रहा हो तो लाइक दबा दो यार. कमेंट डाउन आपको कोई भी क्वेरीज हो, आपको मुझसे कुछ भी कहना हो, अगर वीडियो रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, अगर आपको लगता है कि जो टिप्स मैं बता रही हूँ, जो आइडियाज बता रही हूँ वो अच्छे हैं, और अगर आपको और भी कुछ ऐड करना है, कमेंट डाउन बिलो. नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. नंबर 1, create stories with mirror. Fine tune your living room's aesthetic by putting on mirrors on the wall. Mirrors does not only just reflect the area, makes it look big, also it gives a very, royal vintage feel when it's there. Mirrors ना आपकी ब्यूटी पॉजिटिविटी को भी रिफ्लेक्ट करता है. सो mirrors are must have in your living room. Mirrors look very chic, very beautiful. मिरर्स जब लगे होते हैं ना घर में तो एकदम लग्जूरियस वाली फीलिंग आती है. ऑल्सो अगर आपका घर छोटा है, आपका लिविंग रूम छोटा है, मिरर्स लगाइए, एरिया को रिफ्लेक्ट करता है, एरिया बहुत बड़ा दिखता है. मिरर्स आर द मस्ट. नंबर 2, hanging shelves. Generally, in our Indian household, we do not tend to put much in our walls. We like to keep it just as it is, clean, with nothing on it. But I highly recommend to use wall shelves, hanging shelves. These are personally my favorite. Wall shelves or hanging shelves are like some accessories for your wall. You can keep, let's say, artifacts there. You can keep a vase there. You can keep a flowers there. You can keep whatever you want to. But I would highly recommend you to add some hanging shelves to your plain wall. Plain walls do not look that good. Also, hanging shelves give you that, luxurious look to your wall. It gives एक खूबसूरत सा additive to your plain wall. So I highly recommend these few hanging shelves from Amazon. Also, I'm going to provide all the links to the products which I have suggested here in the description box. You can go check them out. Number 3, and very important, freshen up with flowers. Now what I meant with this is कि घर के अंदर फूल लगाएं? नहीं, इंडोर प्लांट्स जो आते हैं वो लगाएं. इंडोर प्लांट्स में जनरली फ्लावर्स बहुत कम आते हैं. So what you can do is just pluck some flowers from your garden and put it in a vase और घर के अंदर रख सकते हैं. या फिर you can decorate your home
with artificial flowers. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप हैंगिंग शेल्फ लगा सकते हैं. अब हैंगिंग शेल्फ के ऊपर आप क्या लगाएंगे? आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा सकते हैं वास में, आप मिनिएचर इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं. बहुत सारे ऐसे इंडोर प्लांट्स आते हैं जो एक हफ्ते तक या बिना सनलाइट के भी रहते हैं. देयर आर मेनी प्लांट्स जिनको आपको वीकली वाटर करना होता है. वीकली आप थोड़ी देर के लिए बाहर, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं, थोड़ी देर के लिए बाहर रख सकते हो, फिर यू कैन पुट इट इनसाइड. तो add greenery inside your house, which is going to give you a very positive energy and make you feel fresh all the time. Add greenery. Freshen up your home with flowers, which is going to give your home, your room, your living room, your space a very beautiful look. Also, you will always going to feel very fresh. Number 4, incorporate artifacts. Prevent your home, prevent your living space from being an ocean of straight lines and circular spaces just by adding an element of maybe different size, different shape, or unique figures. A coffee table or an unusual shaped planter is going to feel like a piece of art in your living room. It will be unexpected, yet it will be a whole new artistic feel to your living space, but in a budget. Let me give you an example. I live in a rented house. What I did is, दो कार के टायर लिए, एक के ऊपर एक रखे, दोनों को अंदर से स्क्रू किया, उसके ऊपर एक ग्रेनाइट का स्लैब रखा. Voila! Your coffee table is ready. It's the easiest design, yet budget friendly, and a chic looking coffee table ready for you. आपको लगा क्या? दो टायर. आप सेकेंड हैंड टायर्स भी खरीद सकते हैं. उसकी रिम हटा दीजिए. टायर्स आर वेरी वेरी मिनिमल रेट में आपको मिल जाता है. आपको बहुत पैसा नहीं लगता क्योंकि उसमें से रिम चली गई. सिर्फ रबर टायर्स हैं. उसके ऊपर एक आप ग्रेनाइट का स्लैब, बहुत सस्ता आता है. आपकी मर्जी का, आपके डिजाइन का, आपके पसंद का ग्रेनाइट का स्लैब रख दो एंड फिनिश. You can keep a small unusual shape planter उसके ऊपर and yes, your coffee table is ready. Number 5, decorate with a mix of textures. A layered and mix of textures of various materials gives your space a very personalized touch. A mix of maybe metal, glass, wood, and leather, and what type of clothes or material we have. You can use a rug for a different texture. You can use cushions. There are n number of cushion covers, and now I am talking about cushion covers is सबके घर में already sofa होता है. Now if you want to give that particular space, that particular corner with a sofa a new look, what you can do is you can add a new rug. Affordable, very pretty. You can get these on Amazon. Number 2, you can change and switch to another cushions. अलग अलग shapes के, elongated, square, rectangle, circular, many cushions are available. You can use and change their cushion covers. You can use a different material. If you don't have a sofa, you can also create a new sofa, affordable DIY sofa. I'll give you an example. जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक कॉफी टेबल बनाई थी अपने लिए. सेम रेंटेड हाउस प्रॉब्लम. आई कैन नॉट टेक आउट और बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी सोफे पे, क्योंकि इवेंचुअली जब मैं अपने घर जाऊंगी, व्हेन आई एम गोइंग टू डिजाइन अ होम फॉर माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू डिजाइन अनदर सेट ऑफ फर्नीचर रिलेटेड टू दैट एरिया. उस एरिया, उस थीम के अकॉर्डिंग मैं फर्नीचर भी तो डिजाइन करूंगी. फिर ये पुराना सोफा किस काम आएगा? सो आई डिसाइडेड कि मैं एक अफोर्डेबल सोफा डिजाइन करूंगी. व्हाट आई डिड वाज आई गॉट अ पैनल ऑफ पाइन वुड. पैनल ऑफ पाइन वुड आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ पर ग्लासेस मिलते हैं, मैन्युफैक्चरर्स और जो बड़ी शॉप्स होती हैं जहाँ ग्लासेस आते हैं. ग्लास को सपोर्ट देने के लिए जो पैनल मिलता है पाइन वुड का, आई गॉट दोज पैनल वुड. पैनल लेके आई पाइन वुड के 4x2 के. मेरे पास 2 पैनल्स लेके आई. उसके ऊपर मैंने हेवी मैट्रेस जैसा रखा. उसके ऊपर अलग अलग कुशन्स रखे एंड यस, माय सोफा सेट इज रेडी. नाउ मेरा सोफा वाज स्लाइटली नॉट इनटू योर बजट. आप बजट फ्रेंडली नहीं बोल सकते क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा था. जस्ट बिकॉज आई गॉट द मैट्रेसेस डन. मैट्रेसेस थोड़े हेवी थे. जिन मैट्रेसेस पे हम सोते हैं वैसे मैट्रेसेस लगाए. रीजन बीइंग आई हैव 2 ब्यूटीफुल डॉग्स और मेरे दोनों डॉग्स जमीन पर नहीं बैठते, नहीं सोते. तो द आइडिया ऑफ डिजाइनिंग दैट वाज ऑल्सो दिस कि वो जो सोफा है वो
मेरे बच्चों के भी काम आ जाएगा, हमारे भी काम आ जाएगा. So I got मोटे mattresses. You can use sponge वाले जो सिटिंग आती है, you can use that. Affordable होती है. Pine wood furniture are strong yet budget friendly और कोई नुकसान नहीं है उसके. You can use panel pine wood to make your furniture like I did. These were a mix of textures. Now I mixed 4 textures. One was cloth, one was pine wood, one was granite, and another was tired, which I used for table. Mix of textures gives your space a personalized look, a personalized feel. ये मेरे personalized था जो मुझे चाहिए था. You can use it and create it, curate it yourself. I'm going to list few products which you can use जो आप अपनी space को personalize करने के लिए use कर सकते हैं. The sixth and last, brighten up your way. Now, when I say brighten up your way, I am not asking you to do a revamp of your light spaces or light positions. You can. आप lights change कर सकते हो, light के positions change कर सकते हो, but that is something not affordable, but you can do if you want to. Now, what I am going to suggest you is, हमारे घर में सीलिंग लाइट के पॉइंट्स हमेशा होते हैं. What you can add is you can add some pendant lights, you can add some hanging lights, you can add some lamps. Now the lamp suggestion which I'm giving you right now is बहुत cheap नहीं है, but this is the best price which you can get. This is a good price which you can get for this particular product. Now this product I have already suggested to someone. They got the product and this is very nice. So this is the product which I'm suggesting, जो कि मैंने देखा है, किसी ने use किया है. So this is trusted. This is a budget friendly lamp which you can use. This gives a very vintage feel. This gives a very royal feel. अगर आपके घर में कोई corner है जहाँ एक single sitting sofa रखा हुआ है, you can use this lamp there. You can use pendant lights in the 4 corner of your living space or the room. जो 4 corners होते हैं room के, you can use the pendant lights there. You can use LED lamps there. So you can brighten up your space, you can brighten up your light, you can brighten up your way just by adding a few more beautiful lights, not just a tube light and ceiling lights. So these were few ideas with little additions and some changes which will make big fat difference and make your living space, your house, look very beautiful, very chic and very luxurious. I hope you enjoyed this video. I hope ये सारी चीजें आपको useful लगी हो, and I hope you use these tips and tricks और आप अपने living room को एक अच्छा सा makeover दे पाएं. If you do it, if you use any of these ideas, और अगर आप अपने घर का छोटा सा कॉर्नर भी रीडिजाइन करते हो ना इन सब आइडियाज से, प्लीज गेट अ पिक्चर, पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम, टैग मी. आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैंने आपकी छोटी सी हेल्प कर पाई. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई एम गोना मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, वेरी सून, वेरी सून. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.